वो रात तो ज़िंदगी भर मरते दम तक भूल नहीं सकते हम। हम कह सकते हैं कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई कांड हुआ हो जो कि उस रात को घटी। Tout commence par un souvenir d'enfant. Non, pas un souvenir. Une sensation. Un soir, loin de chez moi, des gens ont vécu la nuit noire. Imaginez, c'est un dimanche soir, vous êtes au lit, au chaud. Un peu plus tôt, vous avez regardé un film en famille, une comédie. Vous glissez doucement vers le monde du rêve, le sommeil vous enveloppe. Et puis soudain, vous êtes réveillé par des cris, de plus en plus proches, de plus en plus déchirants. Dehors, c'est la fin du monde. L'accident d'une usine, la fuite d'un gaz toxique. Des milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards, des bébés. किसी का कुछ पता नहीं कि कौन कहाँ भाग रहा है, कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है. Loin là-bas, l'injustice, l'impuissance et l'horreur. बहुत डेड बॉडी थी सुबह के टाइम. Face à la nuit, pourtant, une vision s'est fait jour. Et si la vie, pour refleurir, avait besoin d'être embrassée de manière holistique ? D'où nous vient l'intuition que quelque chose ou quelqu'un va jouer un rôle important dans nos vies ? Je suis devenue reporter. D'histoire en histoire, mon travail interroge notre présence au monde. Un jour, une attachée de presse m'a proposé de rencontrer l'écrivain Indra Sinha, auteur d'un roman nommé Cette nuit-là. J'ai ouvert le livre. Il ne m'a plus lâchée. Son sujet, c'était elle, la nuit noire de mon enfance. La catastrophe de Bhopal. Au cœur de l'Inde, 40 tonnes d'un gaz toxique nommé MIC, ou isocyanate de méthyle, échappé d'une usine de pesticides appartenant à la firme américaine Union Carbide. La pire catastrophe industrielle de l'histoire. Bilan de plus en plus tragique en Inde à la suite d'une fuite de gaz toxique à Bhopal dans le centre du pays. The chilly night of December 2nd, 1984 changed the way Bhopal would live. Des bûchers par centaines. Pas le temps d'identifier les corps. Alors il s'agit bien de la plus grande catastrophe écologique jamais survenue dans notre civilisation industrielle. An official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. Ceux qui sont hospitalisés succomberont pour une grande part à des effets secondaires pulmonaires, pneumonie et affection des nerfs. Le toxique détruira progressivement les centres nerveux et particulièrement les centres de perception, ouïe, odorat et toucher. Plus de 8000 personnes périrent dans la nuit du drame ou dans les 2 semaines qui suivirent. D'autres décédèrent plus tard ou développèrent des pathologies chroniques engendrées par le gaz. Aujourd'hui, on estime à 25 000 le nombre de morts dus à la tragédie et à 600 000 le nombre de personnes affectées. Au bout de quelques années, les traitements classiques ont trouvé leurs limites. Mais Indra Sinha m'avait parlé d'un lieu qui, au cœur de la zone infectée, venait gratuitement en aide aux victimes, en intégrant à ses protocoles les apports de 2 médecines ancestrales, le yoga et l'Ayurveda. Au chevet de l'horreur, pouvait-il y avoir une bonne nouvelle ?
On the evening of the 2nd December 1984, the workers reported some problems in the factory. It was known that the plant was badly designed, it was being run very unsafe manner, and every other day there would be some problem or other. But that day there was a specific problem. Close to midnight, the workers started smelling MIC in the air, and they were worried. And gas was released from about 100 feet high. And all the safety systems that were there, supposed to be there, none of them worked. तो उस रात में करीब 11:45 बजे के बाद जो है हम लोगों को खांसी चलने लगी। जो उसकी जो खुशबू आती है लाल मिर्ची की, वो लाल मिर्ची की खुशबू टाइप की आई और हम लोगों को खांसी वासी चलने लगी। आँखों में जो है आँख नहीं खोल पा रहे थे, खांसी बराबर कंटिन्यू हो रही थी। मतलब धुएं से भर गया था चारों। हाइट इट इज 4 to 5 feet. It was a cold night, so the gas came down because it was heavier than air, and it came down as clouds, poison clouds. It was like an aerosol. At that time, most of the houses around, very close to the factory, they were all mud houses with thatch roofs, with no proper windows and stuff. So the gas actually entered into the homes of sleeping people. मेरी डॉटर थी 5 years, मेरी एक 1 सन था 8 months। तो मैंने अपने बच्चे को उठाया गोद में, सन इज हट में, और मेरी बेटी मेरी इस क्लॉथ इस हटिंग पकड़ लिया। मतलब आंखें बंद करो तो बंद कर रहे हो, और खोलो तो खोलते रहो, मतलब खोल नहीं सकते ना बंद कर सकते। हमें समझ में नहीं आया। फिर चारों तरफ बस हल्ला मच रहा है, और बस जान बचाने के लिए लोग इधर से भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं। But there was no one to tell them that they could put a wet cloth on their eyes and mouth, and they thought that they should reach the hospital as soon as they could, which meant that they ran through the gas clouds, inhaling more and more. And as they inhaled more, the gas went into the lungs and produced so much water inside that most people, thousands of people, died by just drowning in their own body fluid. तो भागने के बाद वहाँ जब गिर पड़े बेहोश होके, मेरे बच्चे वॉमिट करने लगे खास के, और मोशन हो गया मेरे बच्चे का, बेटे का, क्योंकि वो तो बस ऐसा पड़ा हुआ था, बेहोश हो गया बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है। और जाके बेहोश आके फिर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पर गिर पड़ी तो मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर वहाँ से मैं बड़ी हिम्मत करके फिर भागी। भागते भागते हम लोग हमीदिया हॉस्पिटल पहुँचे। And once people reached the hospital, the Hamidiya hospital, they tried calling the doctor at the Union Carbide factory. He said, "Don't worry, just think of it as a strong tear gas and wash with water and everything will be okay." And it was not okay because thousands were dying right at the hospital. हमीदिया हॉस्पिटल में जाके देखा तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं, ना डॉक्टर है ना पेशेंट है, सारा खाली पड़ा हुआ था, और बस भागा दौड़ी मच रही, किसी का कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि क्या है क्या नहीं। उस समय मैं 2.5 प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया।
Union Carbide was the only agency in the world that had information on what to do if MIC hits you, or what does MIC do to you, to your body, to human body. But Union Carbide said that those were trade secrets. Ce qu'ont vécu les gens de Bhopal est au-delà de l'imagination et de la compréhension. Aujourd'hui encore, dans cette partie de la ville, les gens souffrent d'insuffisance respiratoire, de maux articulaires, de soucis artériels, mais aussi de diabète, de dérèglements hormonaux, de troubles psychiques. Les cancers y sont 10 fois plus nombreux que dans le reste de l'Inde. L'usine a fermé, mais ses propriétaires n'ont jamais assumé leurs responsabilités. Les indemnités versées se sont limitées à 500 pathétiques dollars pour chaque personne atteinte à vie, dans sa chair et son âme. Face au désarroi et à l'arrogance pourtant, une idée a germé. Comme un lotus éclos dans la boue. Une grâce au milieu du chaos. When we met with people, we went to their homes. It was almost a common sight to find one corner of their little house filled with bottles and wrappers and packets of empty medicines, and you ask them how many medicines they have taken, they would answer in kilograms, 30 kilograms, 40 kilograms. 1984 में मेरा मैरिज हुआ था। 2 दिसंबर की रात को ये गैस ट्रेजेडी हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया, ज़्यादा उनको खांसी शुरू हो गया, और क्योंकि वो गोल्ड स्मिथ थे, वो मतलब ज्वेलरी बनाते थे, तो उनको सांस की तकलीफ़ हुआ और फिर डाइजेशन ख़राब हो गया और आंतों पे असर हुआ था, तो वो खाना नहीं खा सकते थे, और इसके गैस कांड की वजह से ही उनको तकलीफ़ शुरू हुआ था और फिर वो ख़त्म हो गए थे। और फिर मुझे कोई बच्चा नहीं था, मिसकैरेज हुआ 4 बार। We were really concerned that between 40 and 50% of the medicines prescribed were either not necessary or harmful, and very often both. We found that too many people were being given painkillers for too long, quite likely causing damage to their kidneys and other organs. We found too many people being given steroids indiscriminately, which possibly was damaging their immune system, which was already damaged because of toxic gas exposure. Similarly, we found that antibiotics were being indiscriminately used, and we found rampant use of psychotropic medicines, a lot of anti-anxiolytics, a lot of that. पैसा उस टाइम कुछ नहीं था, इतना कमाई नहीं थी लोगों के पास, इतना रोज़गार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जितना जिसके पास था, जो भी था, बेच बाच के अपने सिर्फ इलाज के ऊपर ही लगाया। I started thinking a little, what can I say, differently, in the sense that I thought of reducing this toxic load of medication somehow. That is when I thought of integrating Ayurveda and yoga, and particularly within Ayurveda, Panchakarma, which are detoxification procedures. I have had a long experience of getting treated or getting taken care of by plant medicines. My mother was a splendid practitioner of plant medicine. So was my grandmother, who probably knew more medicines than my mother. We wanted to show it was possible. That is why we named the organization Sambhavna, which means possibility.
is Raghuram. I come from Kerala. It's the southern part of India. And I am Ayurveda physician at Sambhavna. I'm Dr. Ashwati. I am a female physician, Ayurveda physician here at Sambhavna. I am from a Ayurveda family. I'm the 7th generation. More than 120 varieties of herbs we grow from here. I will give you a little hint about this. It is called, in Sanskrit, this is called dataki. We use the powder of this flower for white discharge. 1 teaspoon of the powder of the flower with honey. We will give 2 times in a day. It's very effective. This is turmeric. We are giving it. We just powder the roots of this, and we will give it tell them to apply in the paste, apply it as a paste, or just give it in wound healing cases in antiseptic conditions. Holy basil, we will say. Tulsi, we will say. Very effective. It's like act as an anti-infectant. Yeah, used as externally and internally. Actually, it's a folklore practice. Like if there is a insect bite or anything, you just apply the juice of the leaves on the affected area. This is Nirgundi, Vitex nigundo. That's a scientific name, and we are using this for all joint disorders. We will just make the oil out of this and ask them to apply before bath. The thing is, they are already affected by chemicals. Their body, right now, the discomfort what they are having is a after effect of chemicals. So Sambhavna doesn't want to put them into a world of chemicals once more. The main thing is there is no side effects. Everything is herbal. Medicines which we are preparing is also directly from the garden. Je connais l'Ayurveda. Quelques semaines après ma rencontre avec Indrasina, je me suis retrouvée en Inde, et un peu par hasard, auprès d'un médecin ayurvédique. Pendant 15 jours, j'ai reçu des soins. 10 mois plus tard, alors que la médecine occidentale m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, j'étais naturellement enceinte de mon fils. Qu'est-ce que l'Ayurveda avait compris de nos êtres, que la médecine moderne ne prenait pas en compte? Ayurvedic treatment is not only about prescribing medicines or something like that. It's, we can say, a holistic approach. Like you want to go for the root cause of the disease. You want to understand his lifestyle. You want to understand his occupational pattern. You want to understand his diet. You want to understand everything. Because it's like completing a circle when a patient comes to you. You are not just prescribing. First you are traveling. You are understanding his emotions, where he has gone wrong, what he has gone wrong, these sort of things. Then you come to the conclusion. उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी जब गैस निकली तो बहुत कमज़ोर है उसकी आँखें. फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो उसकी आँखें कमज़ोर हो गई हैंगी. फिर उसके बाद कुछ खांसी वांसी कुछ अजीब तबीयत होने लगी हैगी. उसके बाद हमें बहुत तकलीफ, हड्डियों में भी तकलीफ हो गई थी, चलने फिरने में भी तकलीफ हो गई थी. Every person is different in our eyes because every body is different. Same disease, different persons, different types of treatments. For the same condition, for one it will be one type of medicine, and for the other it will be other. These people are supposed to have immunity on a lower side actually. So this, what our assumption was, this is due to this toxicity, so the treatment will be removing the toxins, that is detoxification we say. मुझे बहुत अच्छी मालिश करी इन लोगों ने. आज मैं बिल्कुल सीधी होकर बहुत अच्छी चल रही हूँगी. फिर से ऐसा लग रहा हैगा मैं फिर जवान हो गई फिर से. हालांकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ. Ayurveda principles are based on doshas. There are 3 doshas, Vata, Pitta and Kapha. When there is an imbalance in doshas, the disease happens. Treatment is balancing of doshas. Vata means we can say it's something which is dry, which is rough, which is cold. And Pitta is which is hot, which is oily. Kapha is which is, again, it is a cold thing, but it is not dry.
which is also a little bit of oily. You see these parameters in the patients. So you see what type of dosha they are in, what type of dosha imbalance they are in, then you go for that. When we were building the clinic at that time, outside there was some gunfight we didn't know about. And I came out and I saw that the police were beating up innocent people with sticks. So I protested and I stopped the police official. I held his hand and I said, "You can't beat up innocent people." So they turned against me and I got beaten up for maybe about 45 minutes. They broke 4 sticks on me. I was so badly beaten. So I said that I'm not going to leave this, I'll fight on this. So I went to the government hospital, got myself medically examined. I was reported to have 18 serious injuries. And the doctor who had examined me said, "You will have problems recurring and you will have to be in the hospital for about a month." So I came back because I was looking after the clinic being built then. And the people who were working there, they told me that they could take care of me through plant medicines. And they just used this aloe vera and turmeric, and they cooked it on a stove right there, and they wrapped this on me for 1 whole week. And after those 7 days of treating, I was totally okay. I had no pain. And so that also gave me a lot of conviction that it will work. Satynath Sarangi n'est pas originaire de Bhopal. Il est arrivé au moment de la catastrophe pour donner un coup de main. Il n'est jamais reparti. Les gens qui s'engagent me bouleversent. Ceux qui œuvrent pierre à pierre à la construction d'un édifice bien plus grand qu'eux. Un geste d'amour, en vérité. La création d'un espace de communion et de sécurité. Depuis l'enfance, j'ai la sensation que le challenge et le miracle sont là, dans la qualité de la relation que l'on noue avec le monde. Être humain est un chemin de conscience, un chemin de sensibilité. Parfois, nous vivons dans nos bulles en automate péremptoire. Parfois, nous dissimulons nos fragilités derrière des masques de dureté. Parfois encore, nous fuyons dans d'autres sphères le prosaïsme du réel. Mais l'acte de grâce et le sacré ne sont peut-être nulle part ailleurs que là, sous notre nez, au cœur du quotidien. Dans la manière dont on prend soin, du regard que l'on pose, de l'attention que l'on prête, du temps que l'on prend, de la main que l'on tend. Ouverte, présente. We are doing nasya like therapies here. Then this massage with steam, nadi sweda process like nadi sweda, full body massage. We believe that there are some channels inside the body which we call srotas in Ayurveda. So this aggravated vata, we pacify it, and by a steam bath we liquefy these doshas, and these through the channels comes to the abdomen. You see the things like applying, going to steam, but we see things like pacifying vata, bring the vata to the abdomen, then to cleanse it. तो हमको अभी पंचकर्म का 7 साल पहले मालूम पड़ा है, 7 ईयर। हम दवाई भी नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं दवाई। इसी से ठीक हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। मतलब उससे पहले बहुत इलाज किए, कोई फ़ायदा, थोड़ा टेम्परेरी होता था, वो नहीं, परमानेंट नहीं होता, इधर से ही होता है परमानेंट बहुत। और इन लोगों का बिहेव, बीना और गीता का बिहेव भी बहुत अच्छा है। आधा बीमारी तो उनसे चला जाता है, इनके बिहेव से, इनके जो अच्छा व्यवहार है, इनका अच्छा मोटिवेट करने वाला बिहेव है इनका. That there are cases in which modern medicine cannot do much,
but Ayurveda is doing splendidly well. First is autoimmune problems. Autoimmune problems, too many gas-exposed people have like rheumatoid arthritis, like psoriasis, which is a very painful condition and for which there is almost nothing in modern medicine. There are so many cases in which people with diabetes have been advised amputation for non-healing ulcers, and we gave them plant medicine and they are okay. So the word has gone around in the city that people, when they are asked for amputation, they come to the Sambhavna garden. It's Sambhavna Ayurveda is not contradictory with modern medicine. It works with modern medicine. It assists with modern medicine. It tries to complement the parts where it can. It substitutes where it can. And sometimes we innovate. Like we had this like an epidemic of ringworm infection. And people were coming with large areas with ringworm and not responding to any of the antifungal treatments. And then we found that in our garden itself, we had a cactus whose latex could be used. So we started making an oil containing the latex, and we found very good results. If you are a patient that registered at Sambhavna, your record is in our data from a long time. So after, it doesn't matter you come to us by 10 years or after 15 years, your data will be with us. So if you are a sugar patient, after 15 years you come to us, our question will be, what about your sugar medication? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक और मैं नारियल खेड़े में रहता हूँ, भोपाल एमपी के अंदर, और मैं सिलाई का काम करता हूँ। रात में घर पे ही थे और आँखों में जलन और सूजन हो गई थी, फूट और धांस उड़ रही थी जैसे मेरा जल रही हो। अभी यही तकलीफ़ें हैं, बस खाली सांस फूलना, खांसी आना, छींक चलना, यही है बस। This man, he comes to me like 2 months before. He was having sneezing with breathlessness and he had taken many anti-allergic things. Same thing, you take it like 2 weeks, you are fine. 3rd week, you are back again. Then again, it affects occupational activities. It was affecting him very much. So he came to us for Ayurvedic treatment. After 15 days, he was like perfectly fine. Then I told him we will reduce the medicines and we'll go again. Right now, I had stopped these medicines and like it's 2 months, he don't have anything. We were able to understand their stories behind their tears. Bhopal, le frisson du sordide, le parfum de la mort, le cri des oubliés. भोपाल में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। भोपाल में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। आवाज दो। याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। कंपनी का लागत घटाना, लागत घटाना, मुनाफा बढ़ाना। Est-il encore possible de parler de spiritualité, d'unité ou de paix à des gens qui vivent des drames d'une violence inouïe? Je ne sais pas ce qui me touche tant. Le courage peut-être. La solidarité. Cet élan de la vie à résister encore et encore à la destruction, au clivage et au mépris. Les gens de Bhopal ne souhaitent qu'une chose, que ce qu'ils ont traversé n'arrive plus à personne. Leur force est un acte de liberté. Elle est une transcendance. La vie en marche à bras le corps.
My name is Dr. Shweta Chaturvedi. I come from the Chhattisgarh. I graduated in BNY, Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, but here as a job as a yoga therapist. Yoga is a very free medicine. Only use our body, our breath, and our concentration. और जब गैस लगी थी तो बहुत हम सभी मतलब पूरे परिवार वाले ही थे, रात को घर में ही मतलब सो ही रहे थे और सब फिर बाद में सब इकट्ठे हो बोले क्या करें, सब छत पे जाकर बैठ गए थे कि 9 लोग थे टोटल, यानी हमारे घर की मतलब पूरी फैमिली में। यानी मेरे मम्मी पापा थे, मेरे 2 भाई बहन थे, मेरे चाचा चाची, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो भी 6-1 महीने की थी। वो उसको तो पूरा मुँह तक उड़ा कर रखा हुआ था, तो इसलिए वो बच गई। यानी In Sambhavna yoga, we use as a therapy way. We part of the treatment, and in that we include the asanas, pranayama, mudra, bandh, and shuddhi kriyas, as well as we use yoga nidra, relaxation technique. That different posture is a reflex our body and stimulate the glands and stimulate the parasympathetic nervous system. So in this way we treat our body as a physical as well as mental way. मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, बहुत ज़्यादा कंधों पे, गर्दन में, सब जगह मतलब स्वेलिंग बहुत थी, पैरों में भी बहुत स्वेलिंग रहती थी और थायराइड भी था मेरा बहुत बड़ा हुआ। When she come in yoga, she having hypothyroidism more and feel anxiety and breathlessness condition and severe pain in the neck. She crying in front of me because she having more pain and not sleeping last 4 years. I give only 2 asanas and some hot fermentation applied to the neck. She doing a 2 month regular yoga and come like 15 days come for me and give the follow up every time. She come here, I asked how you feel, said me ma'am very nice. यहाँ की दवाइयों से पंचकर्म योगा वगैरह रेगुलर किया है मैडम ने, जैसे जैसे बताया हमने वैसे पूरा लगातार 1-2 महीने यानी सुबह शाम दोनों टाइम किया है। यानी अब मैं एकदम सुकून से सोती हूँ। In yoga protocol like in 15 days, 20 days, 30 days. After that we are follow that. If patient come for 15 days doing the here 15 days yoga and then after take the follow up. After that we see how much improvement है, how much progress is there. मैं सांस की परेशानी ज़्यादा हुई, मुझे सांस के सिवा कोई बीमारी नहीं आती, मुझे सांस में दिक्कत होती थी। पहले मैं पंप लेता था, 2 बार लेता था, कभी 3 बार लेता था, रात में पंप लेने पड़ता थे, गोली दवाई खाते, जब तक गोली दवाई खाते थे जब तक आराम लगा। फिर डॉक्टर साहब ने बोली आप योगा वाली मैडम से मिलो, उनसे योगा करो। योगा फिर मैंने करना शुरू करा। मैं योगा पहले शुरू में मैंने 3 टाइम करा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। When first time he came here, not take inhale in nose, he inhale with the mouth, and that wording is not come in a proper way, very sluggish, and one word he telling me then rest and take so many medicine for the breathlessness in asthma. So in that condition I asked to you could do pranayama. He tell me yeah I will do. In that pranayama, we specifically inhale and exhalation of the air. So in that condition, what happen when inhale the air, the oxygen is go inside and carbon dioxide outside, toxic material outside. They improve the health lungs condition as well as the different parts of the body also. And then when he doing the 3 months regular pranayama and 4 months, he come for me, I feel very better. I am not taking the pump, only taking the medicine.
After 1.5 year, he does not taking any medicine. He came here, I am not taking any medicine, not allopathy medicine, not Ayurveda, only I do yoga. Mais si la tragédie de Bhopal a un début, elle n'a pas de fin. Dans cette partie de la ville, 40 ans après le drame, des dizaines de milliers de bébés continuent à naître porteurs de lourds handicaps physiques et neurologiques. One of the serious issues that became quite apparent early aftermath of the disaster was the difference in the way the children who were exposed in utero, in their mother's womb, and also as well as the children born to gas-exposed parents after the disaster. Imaginez, vous avez échappé au pire, vous êtes vivant. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous êtes aimé, vous vous êtes marié. Vous avez désiré des enfants comme la vie qui revient et l'espoir qui renaît. Mais l'horreur frappe encore. We found that they were not reaching milestones in time. Their physical, social, mental, all of those developments were in a way retarded, were slow. करीब 3 महीने के बाद मेरी बेटी को अस्थमा हो गया। मेरा छोटे बच्चे का ग्रोथ रुक गया था, वो भी बीमार रहने लगा और मेरा तो फिर मिसकैरेज हो गया। तो फिर मैंने बच्चे करने का फिर सोचा ही नहीं कि उस रात को जितने भी बच्चे थे या तो मर गए हैं या उसके बाद होने के बाद कोई भी अपंगता हो सकती है। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बच्चा नहीं करना है। Here Sambhavna, so many women come with gynecologic issues like I would say excessive white discharge, then PCOD, painful menstruation, then I will tell infertility. So early menopause. Early menopause means we can early 30s. There are so many cases in early 30s means very alarming. And we then carried out a study to find out what is happening. And we found our study, which was published in the Journal of American Medical Association, as well as the American Journal of Industrial Medicine. And these studies basically showed that children of gas-exposed parents, and it was much more evident in the male children, were smaller, where they were lighter, and they had smaller heads. Also, we find that too many children of gas-exposed parents have congenital malformations, including malformations of the heart, valvular malformations. And later, of course, there have been other studies as well. There's a study as in 2009 which shows that the immune system of children born to gas-exposed parents is seriously compromised. And there's much evidence to show that the toxic gas exposure has caused changes in the DNA of the exposed individual. The parallel disaster that is ongoing in Bhopal is that of contamination of groundwater. And that again is as serious or maybe more serious than the gas disaster. And this has been caused because of hazardous dumping of waste, poisonous waste, inside the factory and outside the factory by Union Carbide. And we are talking of thousands of tons of hazardous waste dumped there. There have been about 16 studies that have
carried out. They've over the years from 1990 to 2018. And all of these studies, they basically say that there are extremely poisonous chemicals inside in the water and poisonous heavy metals and cause all kinds of health problems, cancers, birth defects that remains unaddressed because totally going outside the law, the American corporations are refusing to clean up this contamination that they have caused. मेरी फैमिली में मेरी माँ का ब्रेस्ट कैंसर से उनका डेथ हुआ 3 साल 3 years survived. My mother is died to cancer. My husband died to cancer. My father-in-law is 2 father-in-law died to cancer. Little brother survived to cancer. So I am very. मैं बता नहीं सकती. आज कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन सरवाइव करने के बाद ये बोलना बहुत मुश्किल होता है उस रात को याद करने के लिए. कैंसर नाम सुन के ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. मैंने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से सोचा कि बचाऊं, लेकिन बचा नहीं गई, बचा नहीं पाई. If you look at the way Dow Chemical or Union Carbide has responded in the US, you will see the difference that they are treating Indian people, Bhopal people very differently. They are carrying out cleanup in the US, they were paying damages, they're paying for health care, but when it comes to Indian people, they are applying double standards. सन 84 से लेकर अभी तक भी लोग आते हैं. जो उस टाइम पे आए थे वो आज भी आते हैं. वो एक फैमिली की तरह जुड़ गए हैं हम लोगों से. तो उस समय जो मेरे अंदर जो फीलिंग थी मेरे अंतरात्मा की, तो मैं खुद हैरान हो गई. मैंने कहा मेरे तो कुछ भी नहीं है जो तकलीफ़ें इन लोगों की है. अगर मैं शायद काम नहीं करती यहाँ पर तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाती. शायद इन लोगों के साथ में वो नहीं. उस टाइम में ना मैं छोटी थी, मम्मा की गोद में ही थी, पूरी फैमिली थी साथ में, हम लोग सब भाई थे मेरे. उस टाइम 3 भाई थे और मैं थी अकेली, 4 बहन भाई थे हम लोग. वो घर वहाँ सब खुला रह गया था. दादी थी घर में तो ओढ़ के बिल्कुल लेट गई थी ये रज़ाई. फिर मॉर्निंग टाइम में हम एक अंकल के यहाँ गए तो वो सुनार थे हिंदू, तो उन्होंने हमें घर में बुलाया अपने. तो उस टाइम में ना हमें बस बहुत वॉमिटिंग हुई और आंखें पे इतनी स्वेलिंग आ गई थी, आइज़ पे स्वेलिंग कि वो दिख भी नहीं रहा था, कुछ बंद थी, पूरे टाइम बंद थी आइज़. लेकिन वो चीज़ें अब पता चलती हैं कि बड़े हुए तो बहुत प्रॉब्लम, और मुझे भी बैक में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए 4, और यहीं आके मुझे पता चला कि मुझे थायराइड भी है. जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है योगा करने से. फ्रेशनेस आती है बॉडी में, खुद अपन एक एनर्जी महसूस करते हैं, और जब तक योगा करते हैं अपने ऊपर भी फ्रेशनेस दिखती है, फेस बॉडी सब. नहीं तो फिर इसके डल टाइप के हो जाते हैं, थकान सी महसूस होती है अगर योगा नहीं करो तो. En arrivant à Bhopal, je n'avais pas d'image. La tragédie avait fait main basse sur mon imaginaire. Aujourd'hui, elle a un pouls, une âme. Elle m'a touchée au cœur. Son histoire ne renvoie pas au passé, mais aux choix que nous faisons partout, aujourd'hui.
C'est l'histoire de notre humanité, de la façon dont nous décidons de l'habiter et de la déployer. Comment traitons-nous l'autre, la nature, nos corps, nos esprits? Quel est l'impact de nos attitudes? Quels hommes et quelles femmes souhaitons-nous être? There may be a lot of talk about cooperation and happiness and universal prosperity and brotherhood and sisterhood. But the reality is that the corporations will sacrifice human and the planet to profit. Bhopal est un miroir grossissant. Son cas est complexe et ses enjeux nombreux. Mais c'est aussi le symptôme hyper aigu de notre société industrielle, qui ne sait pas se contrôler. Selon une recherche publiée en 2022 par la revue scientifique The Lancet, la pollution est désormais le premier facteur de risque environnemental, en termes de maladies et de décès prématurés. On estime à 9 millions le nombre de personnes qui meurent chaque année à cause d'un air, d'une eau ou de sols contaminés par des substances toxiques. 25 000 morts par jour. À l'échelle mondiale, nous vivons tous à Bhopal. On one side you have Dow Chemical and Union Carbide, who are the top guys in the military industrial complex, and on the other side you have half Muslim and low caste victims, Hindu victims, and yet it is possible to have a garden without pesticide and fertilizers just 500 meters south of your factory. That resistance will continue so long as there is oppression, and the struggle will continue so long as there is suffering. Depuis sa création en 1996, financée uniquement par des dons individuels, Sambhavna a fourni des soins à plus de 60 000 personnes et accompagné 37 000 patients sur le long terme. Dans les quartiers alentours, 30 à 40 000 habitants ont aussi bénéficié de son travail de santé communautaire. À l'échelle du désastre, à l'échelle de la planète, son action peut paraître dérisoire, mais elle est la proposition concrète d'autres possibles. Ayurveda and yoga combined can provide many of the answers that the victims of chemical poisoning are facing all over the world. Right now, medical world is missing the word care actually. And we believe care is a word that can do miraculous effects on your health. Le monde crève de ces divisions. Il crève d'avoir été parcellisé, mécanisé, vidé de sa substance sensible. Nos sociétés ont cloisonné le vivant, elles ont séparé l'homme de la nature, le corps de l'esprit, le cœur de l'esprit. जिसके साथ घटती है वही जानता है, वही समझता है, उसका परिवार सरवाइव करता है उस चीज़ से, बाकी कुछ नहीं। ज़िंदगी चल रही है, जब तक जिंदा है तब तक तो ज़िंदगी चलेगी। और मैं संभावना में जब तक मेरे हाथ पर चलेंगे मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी बस यही ख्वाहिश है। Les savoirs du yoga et de l'Ayurveda ne sont ni désuets ni optionnels. Ils sont complémentaires aux nôtres. Défendre une vision holistique est un acte aussi sacré que militant. Sambhavna est une respiration. Mieux, c'est une inspiration. Un changement intime de perspective. Une volonté de répondre au morbide par le fertile. À la perte de sens par le retour aux sources. À la fragmentation par le lien. Au dédain par la bienveillance et la délicatesse. Là se love peut-être la meilleure des médecines. Comme si toute tragédie pouvait être, aussi cinglante soit-elle, un rappel impérieux à l'amour.